Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Good morning, all of you. Till now, we discussed about, in the previous class, we discussed about a classification problem. I think all of you got it. There are different AI model. There are different AI model to solve the classification problem, like k-nearest neighbor, support vector machine, and neighbors. We discuss about these classification AI models. In the same way, another classification model is like that decision tree, random forest, and logistic regression. In case of logistic regression, name is regression, but most of the cases we use logistic regression in case of classification. We discuss about it why. In case of decision tree classification, today I want to discuss about a decision tree classification model. Maybe in my program example, I use this decision tree classification model in case of social networking data. Same data. I implement this. मैं जो implement किया है decision tree classification, तो वो social networking ad data के ऊपर ही implement किए हैं. But remember one thing, कि जो decision tree classification है, ये social networking ad जो data है, इसमें अच्छा से applicable नहीं है. ये डेटा सेट के लिए ये AI मॉडल अच्छा नहीं है. तो हम लोगों को पता है कि आफ्टर implementing any AI model, we check the accuracy. तो जब accuracy चेक करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाए कि whether this model is good for this data set or not, isn't it? But let's see in what type of data, मतलब कैसा टाइप का डेटा का ऊपर वो डिसीजन ट्री AI model implement कर सकता है. Let's see PPT. In my PPT, I arrange the data in this way. Maybe data is like that. And my screen is visible to all clearly, students. Is it clear to all, this PPT? Okay. Okay, thank you, Asutosh. Let's see. This is our data set. Obviously, जब हम लोग real life में काम करेंगे, in case of real life, maybe there are thousands of rows. In my PPT, maybe there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rows. Think about the columns. What are the columns? First column is outlook, second column temperature, third humidity, fourth windy, and fifth one play golf or not. So these are the previous data. Based on the previous data, maybe today we want to create a machine learning model. Using that model, today we have to take the decision whether the golf play executed or not, or maybe cancelled. So here, the play golf or not, that is the decision. The decision depends on some features of the weather, the outlook, temperature, humidity and windy. मतलब golf play होगा कि नहीं, ये सब किसका ऊपर डिपेंड करेगा? आज का डेट में आउटलुक जैसा होगा, टेम्परेचर जैसा होगा, ह्यूमिडिटी जैसा होगा, विंडी जैसा होगा, उसका ऊपर डिपेंड्स करता है. तो देखो here, play golf or not, that is the output.
That is the decision. And what are the features? Outlook, temperature, humidity, and windy. These are the features. And here we predict play golf or not based on these features. That's why these features are called predictors. But remember one thing, students, play golf or not directly depends on the outlook value, temperature value, humidity value, and windy value. Why? Because in case of, if we observe the outlook column को एक बार ठीक से देखो, तो यहाँ देखो आउटलुक 3 टाइप्स है कि रेनी, ओवरकास्ट, सनी, 3 टाइप्स. तो रेनी येस और नो, ओवरकास्ट येस और नो, सनी येस और नो, इसका ऊपर डिपेंड करता है. In the same way, the temperature, there are 3 types of temperatures: hot, mild, cool. Temperature hot, yes or no; mild, yes or no. Same thing for humidity and windy. तो देखो यहाँ जो डिसीजन ले रहा हूँ वो डिसीजन directly not directly depends on the predictor's value, like not depends on outlook. It depends on the leaf node value. I think all of you know the binary tree in data structure. If we arrange this data in tree form, let's see how to take the decision in that case. जैसा ऐसा टाइप का डेटा होगा तो हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे? Just wait. तो देखो यहाँ जो डिसीजन लेंगे वो किसका ऊपर डिपेंड करता है? Depends on the predictor's leaf node value. Leaf node. Why? Maybe in case of outlook column, if we create a tree for outlook, let's see, maybe the predictors is outlook. Outlook. There are 3 types of outlook. देखो rainy, overcast and sunny. Rainy, overcast, rainy, overcast, sunny. Okay. और देखो रेनी का आज का डेट में रेनी है कि रेनी नहीं है वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो रेनी का भी जैसा देखो आउटलुक का चाइल्ड नोड ही है, मे बी लाइक ए ट्री. इफ वी थिंक अबाउट द ट्री, जैसा रेनी का भी चाइल्ड, ये क्या होगा? यस
और नो। इन द सेम वे देखो जैसा ओवरकास्ट का भी 2 लीफ होगा, 2 चाइल्ड होगा, यस और नो, लाइक दिस। इन द सेम वे फॉर Shani, yes or no। तो देखो here the predictor value, using predictor value, if we generate a tree, every tree has some leaf node value, हर एक ट्री का कुछ लीफ नोड वैल्यू है। जैसा मे बी फर्स्ट रो रेनी, हाउ टू रिप्रेजेंट a rainy? Obviously we represent rainy means we represent rainy, how to do this? ये देखो rainy yes but overcast no। Why? Because there are 3 types of outlook: rainy, overcast and sunny. If we represent the first child node value using yes, then other child node values should be no। ओके, तो देखो यहाँ फर्स्ट रो का रेनी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यस नो नो मिक्स, मतलब रेनी को रिप्रेजेंट कर, जो रेनी है रेनी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मिक्सिंग ऑफ लीफ नोड वैल्यूज। देखो मिक्सिंग ऑफ लीफ नोड वैल्यूज। इन द सेम वे इफ वी थिंक अबाउट अनदर प्रेडिक्टर की टेम्परेचर, देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर, हॉट, माइल्ड एंड कूल। सो इफ वी थिंक अबाउट टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी ऐसा ट्री क्रिएट करेंगे तो कैसे होगा, हॉट, माइल्ड, कूल। टेम्परेचर का 3 चाइल्ड है। और देखो जो हॉट, माइल्ड, कूल है सबका भी चाइल्ड नोड होगा हॉट येस और नो, माइल्ड येस और नो, कूल येस और नो। ओके, इसके बाद देखो जो फर्स्ट रो का टेम्परेचर क्या है, हॉट। हाउ टू रिप्रेजेंट द हॉट टेम्परेचर, obviously mixing of leaf node values means hot equal to, if the temperature equal to hot, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हॉट यस, बाकी माइल्ड एंड कूल नो। By mixing the leaf node values we represent the hot temperature। Okay, now humidity, there are 2 types of humidity, high, normal। So think about the humidity, humidity high, normal। So high, नॉर्मल। तो देखो ह्यूमिडिटी का 2 चाइल्ड नोड, तो हाई का भी चाइल्ड नोड होगा, मतलब लीफ नोड, हाई यस और नो, नॉर्मल यस और नो। तो देखो जो फर्स्ट रो में ह्यूमिडिटी क्या है, देखो ह्यूमिडिटी हाई, तो मतलब फर्स्ट रो का ह्यूमिडिटी हाई, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाई। हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, ऑब्वियसली हाई यस, नॉर्मल नो। इन द सेम वे विंडी, विंडी का तो देखो विंडी, check the windy true or false, means yes or no। So in case of windy, yes or no। In case of first row, in case of first row windy equal to false, means we represent the windy property predictor using this। For every predictor there is a tree, and when we take the decision
like this. Here we take the decision. यहाँ हम लोग डिसीजन लेंगे, isn't it? जब डिसीजन लेना है, it's like a root of the tree. Sorry, spelling mistake. डिसीजन, यहाँ डिसीजन लेना. डिसीजन किसके ऊपर लेंगे? देखो जैसा फर्स्ट रो का क्या क्या प्रॉपर्टी है? रेनी, हॉट, ह्यूमिडिटी, हाई, फॉल्स. तो मतलब देखो जब डिसीजन ले रहा हूं तो रेनी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस वन YNN. ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, हॉट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो हॉट obviously YNN. In the same way for first row ह्यूमिडिटी हाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? This one. For first row, wind equal to false. So wind equal to false. Actually, by mixing the leaf node values from these values, by mixing the leaf node values, actually it will represent in case of first row. First row कैसे represent हो रहा है कि rainy, temperature hot, categorical feature humidity high and windy not windy. तो ये एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बाय मिक्सिंग द लीफ नोड वैल्यूज. ये लीफ नोड वैल्यूज का मिक्सचर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कैटेगरिकल फीचर. और यहाँ से हम लोग क्या डिसीजन ले रहा हूँ? देखो प्ले गोल्फ नो इन केस ऑफ फर्स्ट रो कि नो प्ले एग्जीक्यूटेड. फ्रॉम दैट वी डिसाइड कि नो प्ले एग्जीक्यूटेड, नो प्ले. तो देखो ये सिंगल रो एक ट्री रिप्रेजेंट करता है और ट्री का रूट में क्या है? डिसीजन. डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? मिक्सिंग ऑफ द लीफ नोड वैल्यूज. So in the same way we represent every row using that type of tree. Obviously in case of decision tree AI model, actually if the data sets are like that, and in my example I implement the decision tree AI model in same data set, social networking ad data. But remember one thing, if the data sets are like that, at that time the decision tree AI model is more perfect or applicable and it will return more accurate result. Okay, so in case of that data set, this is also a classification problem. Why? Here decision is the output. All the output values are available. That's why supervised machine learning category. And the output type are like that. Yes, no, 0 or 1, true or false. At that time we use classification. But if we check the data set, our decision, our output depends on the mixing of leaf node values of all the predictors. Here features are called predictors because based on the feature we predict the output. Now there is a question, how to check the accuracy, how to measure the accuracy. Previously I talked about it. In case of accuracy, measurement of accuracy, there are two ways. By checking the accuracy, by checking the correct percentage, we check the accuracy also. By measuring the error percentage, we got the accuracy also. But here in case of decision tree, how to check the accuracy? Because here we check the purity percentage of mixing of leaf node values. ये जो लीफ नोड वैल्यूज का जो मिक्सिंग हो रहा है, ये मिक्सिंग में तो एरर आ सकता है. तो ये जो मिक्सिंग ऑफ लीफ नोड वैल्यूज में कितना प्योरिटी है वो मेजर करके एक्यूरेटी चेक कर सकते हैं. प्योरिटी कितना है और
कि इम्प्यूरिटी कितना है, वो चेक करके भी एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई machine learning provides us Gini and entropy method. What I say? Gini and entropy. Actually, entropy is the term in thermodynamics. In case of electricity, what is how to measure the watt power of any or voltage volt. Actually, electricity is nothing but a collection of uh, huge number of electron, protons, and neutrons. Whether electricity is uh, positive or negative, how to measure it? Based on the mixing of electron, proton, and neutron. And in the same way, here we take the decision based on the mixing of leaf node values. That's why here machine learning provides us two methods. One is Gini method and another is entropy method. Using this, actually, we measure the accuracy of our model. Let's see. So in case of that type of data set, the decision tree AI model is best. So decision tree classification works on the same concept decision tree regression. So regression में भी use कर सकते हैं, same concept. अच्छा, here I implement this in case of same data set. Let's see the coding at first. Coding is very easy. Coding is not so difficult. देखो, same thing. I implement this in case of social networking ad data. Read the data from that CSV file and store it in a variable data set. Data set is nothing but a data frame. After reading the data from the CSV file, what we do, dataset.ilog, we read 2 and 3th column. 2 and 3th column means 0, 1, the 2th column and 3th column of the feature. I implement this in case of same data set. Okay. The implementation is same. 2 and 3th column are the feature and store it in the variable x. Then dataset.ilog, we extract 4th column and store it in the variable y. After extracting the feature and output, what we do, I think all of you know that, we split the data, train underscore test underscore split. By splitting the x values, we generate x train and x test. By splitting the y values, we generate y train and y test. And test size equal to 0.25, means 75% data we use for training purpose. And due to the high range value available in the features, what we do, there's the same mechanism, standard scaler. We scale the training data using fit underscore transform function and update the extend variable value, and we scale the test data using transform function and update the x test values. After that, from sklearn.tree, import decision tree classifier. Means decision tree classifier is defined as a decision tree classifier class in this sklearn.tree module. And we create an object of that classifier. The object name is maybe classifier, but think this thing.
What is this? Criteria. Gini, there are two types of criteria. One is Gini and another is entropy. What is Gini and entropy? Just a minute. Actually, these are two functions. Decision tree algorithms use information gain to split a node. मतलब वो split करेगा. जो leaf node value है, leaf node value mixing करके वो actually information gain करेगा. क्यों? क्योंकि for taking the decision, तो decision लेने का पहले information gain करना चाहिए. तो decision जब लेंगे तो उसका information कहाँ से मिल रहा है? leaf node value से. Gini index or entropy is the criteria for calculating the information gain. मतलब purity information gain मतलब gain में क्या चेक करेंगे? Purity कितना है, impurity कितना है. Both Gini and entropy are measure of impurity of a node. Both. A node having multiple classes is impure, whereas a node having only one class is pure. तो नोड में मल्टीपल क्लास भी हो सकते हैं, सिंगल क्लास जैसा वो हिंदी सिंगल क्लास. Entropy in statistics is analogous to entropy in thermodynamics, where it signifies the disorder. मतलब एंट्रोपी कैसे मेजर करता है कि कितना इम्प्योरिटी है, वो चेक करके कितना प्योरिटी वो कैलकुलेट करता है. If there are multi classes in a node, there is a disorder in that node. हो सकता है. And information gain is the entropy of parent node minus sum of weighted entropy is all the of child node. The information gain is the entropy मतलब disorder, is the entropy of parent node minus sum of the weighted entropy of child nodes. Weight of a child node is number of weight of child node means what? Weight of a child node is number of samples in the node divided by total samples of all the child nodes. Actually, there is a mathematical background. Similarly, information gain is calculated with Gini score. तो सर डिजॉर्डर चेक करके हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं. तो एंट्रोपी से एक्चुअली क्या कैलकुलेट कराएं? कितना एक्यूरेसी है, कितना प्योरिटी है. इन द सेम वे से को कितना डिसऑर्डर नहीं है मैच केसेस से वो कैलकुलेट करके भी कर सकते. तब हम लोग क्या यूज करेंगे? गिनी स्कोर यूज करेंगे. तो इसलिए देखो जो डिसीजन ट्री and I collect this reference from that website. I share this, just read this blog for more information. In case of decision tree classifier, and I suggest all of you just see the documentation. Always see the sklearn documentation also, like this. It will be more helpful for your interview. Today internet is little bit slow. Acha, sklearn in this way. Always read the documentation also. Obviously, I send the PPT, no problem, but sklearn dot decision tree dot decision tree classifier. Check it. And very clearly defined all the things over here. Maybe यहाँ वो ट्री बना के वो डिस्क्राइब नहीं किया. देखो criteria, Gini and entropy function to measure the quality of a split. जो split कर रहा हूँ, leaf node generate कर रहा हूँ. Supported criteria are Gini for the Gini impurity and entropy for the information gain. तो ऐसा different
क्राइटेरिया है देखो, तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्राइटेरिया इक्वल टू गिनी सेट करके पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट all the things are same. देखो classifier dot fit x10 y10, then classifier dot predict y predict. Then we check the accuracy. It is a classification problem, so you can calculate the accuracy by using a confusion matrix also. Now, if we print the accuracy, in case of social networking ad dataset, what is the accuracy over here? 0.9 means it will predict. In case of that dataset, if we implement the decision tree AI model at that time, decision tree AI model predict the result with 90% accuracy. And in the previous class, we checked that if for that dataset, in case of KNN, we got the result we got the result with 93% accuracy. In case of SVM RBF kernel, we got 93% accuracy. That's why for that data set, the decision tree algorithm is not so good. It will not return the more accurate value. Okay. In the same way, you can check the accuracy by changing the criteria, that is hyperparameter pruning, by updating the hyperparameter. One is Gini and another is entropy. Entropy. Now check the accuracy. If we execute the program, just wait. Let's see. That is the accuracy. देखो 91%. तो मतलब थोड़ा सा अच्छा दे रहा है जब क्राइटेरिया को चेंज करो, लेकिन इतना चेंजेस नहीं हुआ फॉर दैट डेटा सेट। लेकिन जब कोई कोई डेटा सेट है, जब ऐसा चेंज करेंगे क्राइटेरिया, मे बी वो एक्यूरेसी चेंज हो सकता है। तो इसलिए एवरी टाइम वी हैव टू टेस्ट इट। So in case of decision tree, actually every categorical feature matlab every row in the training sample, like this. For every row, it will create and by mixing the lead node values, we take the decision. That is a decision tree AI model. And what is random forest? In case of random forest, actually for every categorical feature, we create a multiple tree. Why? Because I think all of you know that what is forest? Forest is a collection of trees. So in case of random forest, actually logic is same, but for every categorical feature, in case of decision tree, it will create a single tree. But in case of random forest, for every categorical feature, it will create multiple sample of trees and create a random forest. And from the forest, we take the decision. Why? देखो in case of random forest मतलब क्या है? फॉरेस्ट मतलब बहुत सारा ट्री होगा, तो सेम कैटेगरिकल फीचर के लिए मल्टीपल ट्री क्रिएट कराएंगे, तो मतलब क्या होगा, एरर और कम हो जाए। तो इसलिए बाद में रैंडम फॉरेस्ट एआई मॉडल भी इंप्लीमेंट हुआ है। तो देखो इन केस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट द लॉजिक इज सेम, लेकिन डिफरेंट क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल्स, means what is the number of trees created for every categorical feature. We can pass this. Let's see, in case of random forest, there's thoda sa different hyperparameter. Let's see, in case of random forest is also applicable in case of regression. Random forest classification. Let's see.
देखो, I implement this in same data set. Social networking ad. Splitting operation is same, scaling is same, but in case of classifier, this random forest classifier is defined inside the sklearn.ensemble module. Why? It is an ensemble learning. Actually, it will create multiple samples to take the decision. Because when we create, means it is a iterative process. कितना सैंपल्स क्रिएट करेगा, सैंपल क्रिएशन कब स्टॉप करेगा कि देखो नंबर ऑफ सैंपल इंक्रीज करते करते जब देखेगा कि नहीं एक्यूरेसी में इतना कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है तो वो स्टॉप कर देगा. देखो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, व्हाट इज द पैरामीटर ओवर हियर, एक्स्ट्रा पैरामीटर, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स, नंबर ऑफ सैंपल्स. देखो हियर वी पुट नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स इक्वल टू 100. बाकी सब देखो सेम criteria, Gini or entropy, anyone you can use, just like a decision tree. Just here, forest means a collection of trees. That's why we have to pass a value, number of estimator. Obviously, if we are not pass any value for that parameter, let's see. sklearn dot ensemble learning nsm random forest classifier. Check the documentation. The number of estimator means number of tree in the forest. एक forest में कितना tree create करेगा? By default 100. You can change the value also 200, 300, and every time we have to test the accuracy. क्योंकि accuracy check करना है. और ये देखो कुछ वर्जन रिलेटेड कुछ दिया है तो मेरा जो वर्जन है वो अपडेट किया नहीं तो इसलिए वार्निंग आ रहा है कि चेंज द वर्जन 0.22. by default n underscore estimators change from 10 to 100 in 0.22 version. तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन एवरी टाइम, क्योंकि बाद में आप लोग जब इंडस्ट्री में काम करेगा तो पाइथन वेरी फ्रिक्वेंटली वो वर्जन अपग्रेड करता है क्योंकि अभी भी अपग्रेडेशन चल रहा है तो इसलिए वो चेक करना चाहिए. और डिफरेंट पैरामीटर्स है देखो, क्राइटेरिया, गिनी और एंट्रोपी, मैक्सिमम डेप्थ. देखो यहाँ सब कुछ डिफाइंड है डॉक्यूमेंटेशन में. मैक्सिमम डेप्थ भी दे सकते, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री. इफ नन द नोड्स आर एक्सपेंडेड until all leaves are pure or until all leaves contain less than minimum sample of split sample. दे सकता है. minimum sample split, the minimum number of samples required to split an internal node. कितना internal node को कितना चाइल्ड नोड में स्प्लिट करेंगे तो आप वैल्यू पास कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो 2 यूज करेगा. So these are the hyperparameters. So in case of decision tree and random forest, both are same. Actually here in case of random forest we create a multiple sample of trees. All of you got it, student? And when we implement, देखो random forest बाकी सब coding same and we check the accuracy. When we check the accuracy for that data set, for social networking ad data set, what is the accuracy over here? देखो 0.91. मतलब with 90%, 91% accuracy, it will predict the result for that data set. All of you got it, students? Anyone, any doubts, any question, any query? So देखो machine learning program is very easy. Just we have to know all the background. All of you got it clearly, students? Reply, please reply me. Okay, thank you, Asita. Or anyone, any doubts?
अच्छा, now we think about the logistic regression. देखो term we use regression means all of you say that sir that is logistic regression algorithm. That's why we implement this algorithm in case of regression model. Obviously you can use this, but why most of the time we say that logistic regression classification? Why? Actually, in case of simple linear regression, there is a mathematical background, polynomial mathematical background. K nearest neighbor, there is a mathematical background to measure the distance, isn't it? In case of logistic regression, actually here we use logistic function. What is logistic function? Just like a sigmoid function. Logistic is a mathematical function. Logistic function. Yes. What is logistic function? That is, for every feature x, we calculate L by 1 plus a e to the power bx. That is the equation. Sorry, that is the logistic function. And remember one thing, student, just wait. इतना वैल्यू यहाँ वैल्यू नहीं है एक बार अच्छा कौन सा अच्छा जस्ट in case of logistic function actually we check the logistic growth of the function and it will we calculate the y value and always y value lies between 0 and 1 like a sigmoid function जो भी वैल्यू है देखो हाईएस्ट वैल्यू होगा 1 लोएस्ट वैल्यू होगा 0 0 और 1 के अंदर तो यहाँ देखो जो मिड पॉइंट 0.5 तो 0.5 और ग्रेटर देन 0.5 होगा तो क्या बोलेंगे टेंस टू 1 पॉइंट लेस देन 0.5 होगा तो टेंस टू 0 so actually if it is a regression problem actually we classify every categorical feature belongs to two type may belongs to two type कि जो भी कैटेगोरिकल फीचर है तो वो सब कैटेगोरिकल फीचर दो टाइप का हो सकता है आफ्टर कैलकुलेटिंग द लॉजिस्टिक ग्रोथ कि आइदर 0 टाइप होगा आइदर 1 टाइप होगा तो मतलब क्या कर रहा हूं तो एक्चुअली हम लोग क्लासिफाई कर रहा हूं तो इसलिए देखो इन द एआई मॉडल नेम इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन but due to the use of logistic growth function actually we classify every categorical feature whether the categorical feature belongs to 0 or not belongs to 0 or belongs to 1 we check that that's why the logistic regression AI model mostly use in case of logistic regression mostly used in case of classification. That's why the algorithm is called logistic regression classification model. समझ में आया सबको? अच्छा, let's see. Coding is same. देखो classification comes under supervised learning. All of you know that. Output variable of a classification problem is a label or a category.
तो classification problem का output मतलब y value is a label or category. For example, an email can be a spam or not. The spam mail checking. An animal can be of a dog or cat. So classification can be done in multiple categories too. तो देखो ऐसा तो डॉग और कैट में मल्टीपल कैटेगरी हो सकता है, डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन एटसेट्रा. ए व्हीकल कैन बी ए ट्रेन, ए बस, ए कार और ए बाइक. We will train certain machine learning algorithms with input and output levels and predict class for newly provided input. Let us go through these algorithms one by one. Maybe till now we discuss about k-nearest neighbor, support vector machine, naive Bayes classification, decision tree, random forest, and we discuss about confusion matrix also. Now we want to discuss about this logistic regression classification. Logistic regression classification can predict result from observation and classify appropriately. Maybe problem statement. Consider we have a data set, same data set. I implement all the algorithm in same data set. Consider we have data set of users of social networking site, user ID, gender, age, salary. We are a car manufacturing company maybe and have launched a great car. And we want to know whether users will buy our car or not. We have to predict this for promoting our business. We have some data from observations as below. It has user ID, gender, age, and salary of a person, and whether he purchased the car or not. Purchase the car or not. Same data set. So based on that, let's see. The coding is same. Data set pd.read underscore csv social networking add. Extract 2 and 3th column. These are the features. Store it in X. Dataset.ilog, extract 4th column and store it in the variable y, that is the output. After that, we split the data, generate x10, xtest, y10, ytest. Then using standard scaler, we scale the training data and test data, same process. But when we create a model, the logistic regression is defined inside the sklearn.linear underscore model. We create an object of that class. That's the same thing. Baki coding almost same. And we imported logistic regression class from sklearn.linear library. Classifier as object of logistic regression, fitted training data into classifier, and predicted results for xtest and stored in ypredict. So let's see. So that is the important over here. Why we use logistic regression in classification? Because in case of logistic regression, we use a logistic function. Actually, logistic function classify all the category. Logistic regression classification. देखो same, except यहाँ different. And after that, we check the confusion matrix and accuracy also. If we execute the program and check that if we use a logistic regression classification algorithm for social networking and data site, at that time it will return the result with 89% accuracy. So for that data set, this model is not correct. So when you are working with any classification problem, at that time you have to test your data set. In case of real life also, in case of project development also, test the accuracy every time. So is it clear to all what is classification, what are the AI models available to solve the classification problem? After that, we want to discuss about unsupervised learning. Okay, till now we discuss about supervised learning, different types of supervised learning.
and discuss about the different types of AI approach available in regression and classification problem also. Anyone, any doubt students? सबको अच्छा से समझ में आया? Classification, how to write a program. Anyone, any doubts, any query? जो भी जिसका query है, कुछ भी requirement है, तो हमको वो मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए. आई विल हेल्प यू. Anyone, any doubts till now? Acha, next, I want to discuss about unsupervised learning. Acha, when we use unsupervised machine learning technique or category, theoretically previously we discussed about it, if in data set there is no output value, there is no output value means, think about the Zomato food service or any other food services. In case of Zomato food service, they provide us some discount percentage. Discount percentage depends on the past spending amount by the customer. मतलब customer पहले कितना spend किया है उसका ऊपर depend करता है कि उसको discount कितना मिलेगा. तो देखो, as a Zomato food service manager, you have to calculate the discount percentage. Isn't it? So here spending amount is the feature. What is the output? What is the output over here? कि डिस्काउंट कितना मिलेगा. तो देखो, पास्ट प्रीवियसली जो डिस्काउंट मिला है कोई कस्टमर को वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कितना डिस्काउंट मिलेगा वो कैलकुलेट करना. तो प्रीवियस जो डिस्काउंट परसेंटेज वो आउटपुट नहीं है, क्योंकि प्रीवियस जैसा डिस्काउंट नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा. मे बी इंक्रीज हो सकता है, मे बी डिक्रीज हो सकता है. सो देखो, हियर इन केस ऑफ डेटा सेट दिस इज नॉट अवेलेबल. The output is not available. Only past spending amounts are available for multiple customers. Maybe 100 rupees, maybe 300 rupees, maybe 400 rupees, maybe 1000, maybe 2000. So based on the past spending amount, we have to calculate the discount percentage. How can we calculate this? कि आप लोगों को मैं बोलूंगा कि अच्छा बोलिए स्टूडेंट, मैं भी यहाँ 1 2 3 4 5 कस्टमर्स है, उन लोगों को डिस्काउंट देना है, तो कैसे करेंगे? और मे बी यहाँ 1000 ऑफ कस्टमर्स है, सबको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना है बेस्ड ऑन द पास्ट स्पेंडिंग अमाउंट. हाउ टू डू दैट? ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू से दैट कि सर पहले एक काम करेंगे, मे बी 1000 ऑफ कस्टमर्स है, बेस्ड ऑन द पास्ट स्पेंडिंग अमाउंट कुछ ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, ग्रुप. लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा हूँ कि at first we create some group. After creating the group, maybe there are 3 groups. There is a big question. Sir, why 3? Why not 5? So when we create the group, there is a question. What is the number of group? What is the number of groups? Later we discuss about it. If we create 3 groups, it will return best optimum value. If we create 5 groups, it will return best optimum value.
later we discuss about it. After creating the group, क्या करेंगे? तो ग्रुप मतलब क्या है कि हर एक ग्रुप में कोई नंबर ऑफ कस्टमर्स है और ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे? मे बी इन केस ऑफ दैट केस if the past pending amount starting from 100 to 500 a group, 501 to 1000 a group, 1000 to 2001 एक ग्रुप. तो ग्रुप क्रिएट करने के बाद देखेंगे कि हर एक ग्रुप में काउंट करेंगे, हर एक ग्रुप में कितना नंबर ऑफ कस्टमर्स है. बेस्ड ऑन दैट एक्चुअली डिस्काउंट परसेंटेज जो दे रहा हूं वो मतलब क्या है कि एक्चुअली हम मेरा जोमेटो का जो प्रॉफिट अमाउंट है वो प्रॉफिट अमाउंट का कुछ परसेंटेज जो कस्टमर को दे रहा है फॉर प्रोमोटिंग हिज बिजनेस. तो मतलब वो देखेंगे कि कितना अमाउंट बांटना है सब कस्टमर्स को. तो वो अमाउंट देखो 3 ग्रुप्स based on the past pending amount, then we can decide ki if group 1 got 2%, then second group got 3% discount, or maybe third group got 5% discount. After creating the group, we calculate all the things mathematically. But here it is very difficult to guess what will be the number of groups over here and which will return the best optimum value. All the things are provided by unsupervised learning. And here groups are called cluster. These are called cluster. That's why unsupervised learning is called clustering process. These are called cluster, and groups means cluster. 3 groups means 3 cluster. And that's why unsupervised learning is called a clustering process. Okay, let's see. There are different AI model available in unsupervised clustering approach. और आप लोगों को तो पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, पीपीटी थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा और जो भी डाउट्स होगा हमको क्वेश्चन कीजिएगा. आई विल हेल्प यू, नो प्रॉब्लम. अच्छा, clustering. So clustering is or dividing the population or data points into a number of groups. Different group में divide करना है such that data points in the same groups are more similar. मतलब similar type group, मतलब जैसा past pending amount same type होगा तो वो सब लेके ग्रुप क्रिएट करेंगे. तो इसलिए मैं पीपीटी में कैसे लिखे हैं देखो, डेटा पॉइंट्स मतलब एक एक कस्टमर एक एक डेटा पॉइंट एक एक डेटा इन द डेटा सेट. Data points into a number of groups such that data points in the same groups are more similar to other data points in the same group than those in the other groups. In simple words, the aim is to segregate the groups with similar traits and assign them into clusters. मतलब सिमिलर टाइप डेटा देके क्या करेंगे, ग्रुप्स क्रिएट करेंगे और डिफरेंट टाइप लेके अदर्स ग्रुप में अदर्स क्लस्टर्स क्रिएट करेंगे. That is unsupervised learning. Here, in case of unsupervised clustering process, 2 types of clustering. One is hard clustering and another is soft clustering.
In hard clustering, each data point either belongs to a cluster completely or not. कि देखो जैसा प्रीवियसली आप लोग क्लासिफिकेशन रिक्लासिफिकेशन में भी जैसा नई बयास नई बयास में जो क्लासिफिकेशन किए थे तो बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, लेकिन जब एसवीएम यूज किए थे तो उसमें क्या देखे आइदर बिलोंग्स टू वन क्लास और नॉट। तो ऐसा देखो क्लस्टरिंग में क्लासिफिकेशन जैसा मल्टीपल क्लास नहीं है, मल्टीपल क्लस्टर है। तो वहां देखेंगे कि हर एक डेटा पॉइंट्स आइदर एक क्लस्टर के अंदर होगा कि बाहर होगा, दैट इज कॉल्ड हार्ड क्लस्टरिंग। बट व्हाट इज सॉफ्ट क्लस्टरिंग? Based on the probability, what is the probability belongs to red cluster or green cluster? Maybe red or green, two types of cluster. So based on the probability we check that. There are hundreds of algorithms for clustering process. In hard clustering, each data point either belongs to a cluster completely or not, we check that. In soft clustering, instead of putting each data point into a separate cluster, a probability or likelihood of that data point to be in those cluster is assigned. तो पहले तो आप लोग प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी प्रायर प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी चेक किए। तो प्रोबेबिलिटी यूज करके भी क्लस्टरिंग कर सकते। So for two types of clustering, there are huge number of clustering algorithms. Type of clustering algorithms. Since the task of clustering is subjective, the means that can be used for achieving this goal are plenty. Okay? Since the task of clustering is subjective, obviously, it is subjective, means that can be used for achieving this goal are plenty. In fact, there are more than 100 clustering algorithms known, but few of them algorithms are used popularly. Now, what are these? First one, connectivity model. How to execute the clustering process using connectivity model? These models are based on the notion that the data points closer in data space. देखो यहाँ भी डिस्टेंस यूज हो रहा है, क्लोजर की क्लोजर नहीं है, कैसे चेक करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस। द मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द नोशन दैट द क्लोजर इन डेटा स्पेस एग्जिबिट more similarly to each other than the data points lying further away. जितना सारा डेटा पॉइंट्स दूर में है तो वो सेम टाइप नहीं है। थिंक अबाउट द डेटा विजुअलाइजेशन प्रोसेस। जितना सारा डेटा पॉइंट्स थोड़ा दूर में है, डिफरेंट क्लस्टर में, जो नियर डेटा पॉइंट्स है सब लोग लेके एक ग्रुप, सिमिलर टाइप डेटा पॉइंट्स एक ग्रुप क्रिएट कराएंगे। ओके, इन केस ऑफ कनेक्टिविटी मॉडल। So I write in my PPT, these models are based on the notion that the data points closer in the data space exhibit more similarly to each other than the data points lying further away. And this model can follow two approaches. What is this? In the first approach, they start with classifying all the data points into separate clusters and then aggregating them as a distance decrease. तो मतलब यहाँ क्या करेंगे? Actually, think about the data visualization process. Okay, that is maybe x-axis. Okay. X-axis, y-axis. Here we create, maybe there are 30 customers data. Okay. It means 30 data points. For every data point, it will create a cluster. For every data, each data point.
like this. Maybe there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 customers. जितना कस्टमर्स है सबके लिए एक एक करके क्लस्टर क्रिएट करेगा. 9 कस्टमर्स है, 9 क्लस्टर, 9 ग्रुप्स एट फर्स्ट. उसके बाद क्या करेगा? बोल रहा हूँ कि जितना सारा नियरेस्ट मतलब यूक्लिडियन डिस्टेंस. तो मे बी y एक्सिस रिप्रेजेंट यूक्लिडियन डिस्टेंस. जितना सारा नियर है तो वो सब लेके क्या करेंगे? नियरेस्ट क्लस्टर मतलब सिमिलर टाइप, तो मार्च करके सिंगल क्लस्टर क्रिएट करेंगे, सिंगल ग्रुप क्रिएट करेंगे, 2 लेके सिंगल ग्रुप. इसके बाद देखो इसका ये जो क्लस्टर है इसका नियरेस्ट कौन सा है? दिस वन. मर्ज दिस एंड क्रिएट a सिंगल क्लस्टर. इन द सेम वे देखो ये क्लस्टर एंड ये दिस क्लस्टर nearer to each other. Using these two cluster, merging these two cluster, create a single cluster. Again, this cluster and this cluster, merge this. Then again, these are the nearest clusters, this one and this one. By merging these, create a cluster. Then this one and this one. After that, maybe ye cluster, ye cluster. Then this cluster is nearer to this one. Generated cluster. Now this cluster, merge this cluster and this cluster. तो ऐसा merging operation कितना तक चलेगा? When we reach in the single cluster at that time we stop it. तो देखो यहाँ जो merging operation कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? देखो bottom to up मतलब bottom up approach. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. There are two clustering process available in case of connectivity model. First approach, they start with classifying all the data points into separate clusters. जितना सारा data points है एक एक separate cluster पहले create. Then aggregating them as the distance decrease. जब distance कम होगा तो क्या करेगा? Aggregating them, merge them. तो देखो ऐसा merge करते जाएगा. कब तक merge करते जाएगा? Till we reach into the single cluster. And this is called dendrogram. Why we create this dendrogram? Actually, from the dendrogram, a clustering algorithm decide the perfect number of groups, perfect number of groups, number of clusters over here. How to do that? Later we see the program also. How to decide कि व्हाट देखो यहाँ तो जितना सारा कस्टमर है सबके लिए एक एक क्लस्टर पहले क्रिएट किए थे, मार्च किए थे, ऐसा किए थे. क्यों किए थे? यूजिंग दिस डेंडोग्राम वी डिसाइड what will be the best fit number of groups in between these customers. How to decide this? Actually here we check in this way. We draw a horizontal line, that is horizontal line, and we check that this horizontal line, in which interval, in which space this horizontal line traverse maximum distance vertically. देखो in which space the horizontal line traverse maximum without intersecting any cluster. मतलब ये जैसा टच करेगा मतलब intersecting a cluster. देखो यहाँ intersect करेगा. So means what I say, we check in which space
the horizontal line traverse the maximum distance without intersecting any cluster. कोई भी क्लस्टर को इंटरसेक्ट टच ना करके ये जो ट्रेवर्स कर रहा है कि ये इंटरवल में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि ये इंटरवल में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कौन सा स्पेस में और एनी अदर विदाउट इंटरसेक्टिंग एनी क्लस्टर। देखो यहाँ ऐसा करेंगे तो ये इंटरसेक्ट हो गया तो यहाँ भी एक इंटरवल है। तो देखो as per my dendrogram we check that this horizontal line traverses the maximum distance in this space. So here in that space we check that how many vertical line intersect this horizontal line. देखो here we check that there are two vertical line intersect this horizontal line. That's why we decide that the number of groups will be 2. Maybe sometimes it is very difficult to guess by observing this dendrogram. At that time, maybe ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये स्पेस में भी जितना ट्रैवर्स हो रहा है ये स्पेस में भी उतना ही ट्रैवर्सिंग हो रहा है। तो क्या करना चाहिए बाद में हम लोग वो हाइपर पैरामीटर चेंज करके टेस्ट करेंगे। डेटा विजुअलाइज करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। That is connectivity model and this is a bottom up approach. And another approach is also available top down approach. Top down approach मतलब पहले जितना सारा कस्टमर से सबको लेके एक सिंगल ग्रुप क्रिएट कराए उसके बाद जितना जितना वो डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा उसको स्प्लिट करते रहेंगे till we reach into which condition कि number of cluster equal to number of customers मतलब we start from here and reach into this part. So top-down approach is also available. So here in my PPT I write, in the second approach, all the data points are classified as a single cluster. मतलब जितना सारा data points है सब एक single cluster में, single group में, and then partitioned as the distance decrease. उसके बाद partition create करेंगे। जब वो डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएगा पार्टीशन करते रहेंगे when we terminate for every data points if there is a single cluster then we stop. So the choice that is connectivity model. Another one is centroid model. What is centroid model? These are iterative clustering algorithms in which the notion of similarity is derived by the closeness of a data point to the centroid of the cluster. I repeat once again, read carefully, listen carefully. These are iterative clustering, मतलब multiple times iterative process. कि at a time वो cluster बना देगा, no. Iterative clustering algorithm, in which the notion of similarity is derived by the closeness of the data point to the centroid of the cluster. तो मतलब यहाँ जो cluster create कराएंगे, तो हर एक cluster का एक center point है. तो जितना सारा डेटा पॉइंट्स वो सेंट्रॉइड का नियरेस्ट है तो एक वो सब डेटा पॉइंट्स वो क्लस्टर बिलोंग्स टू दैट क्लस्टर और जितना सारा डेटा पॉइंट्स फार अवे फ्रॉम एनी सेंट्रॉइड ऑफ क्लस्टर कोई एक क्लस्टर का सेंट्रॉइड से बहुत दूर है तो मतलब these data points are under the different cluster. तो मतलब क्या हुआ? तो actually scenario is like that. Maybe this is x-axis, this is y-axis.
this y axis. तो क्या बोल रहा हूं कि हर एक क्लस्टर का एक सेंट्रॉइड है. मे बी ऑल द सेंट्रॉइड्स आर मार्क्ड बाय these stars. Red center, that is red star represent red cluster maybe. Another one green star, maybe दो. Okay, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है. नंबर ऑफ ग्रुप्स डेंडोग्राम से डिसाइड कर लेंगे. नंबर ऑफ ग्रुप्स कुछ भी हो सकता है. उसके बाद क्या करेगा, जैसा ये सब डेटा पॉइंट्स है, देखो जितना सा रेड, देखो रेड सर्कल, ये सब डेटा पॉइंट्स nearer to the red cluster. In the same way, green cluster, green data points. तो देखो यहाँ ये जो डेटा पॉइंट्स है, ये क्लस्टर का, what are these? These are called centroid, means center point. These are called centroid. Centroid of red cluster, centroid. And this is the centroid of green cluster, another centroid. Means center point, centroid. Spelling mistake. Centroid, maybe green. Centroid of red cluster. Red cluster. तो देखो जितना सारा डेटा पॉइंट्स नियर टू द सेंटर क्लोज्ड, तो वो लेके ग्रुप क्रिएट करेंगे. फार अवे जो इतना सारा है, तो मतलब अदर सेंटर, अदर क्लस्टर, तो अदर क्लस्टर में भी एक सेंटर पॉइंट होगा. मतलब ये सेंटर पे जितना सारा नियरेस्ट है वो सब लेके एक अदर क्लस्टर क्रिएट करेगा. बट इट इज इटरेटिव अप्रोच. व्हाई? Actually, don't think that at a time it will create 2 clusters and assign the data points under any cluster. No. What is the process over here? Actually, at first, this is an iterative approach. How it will work? Let's see. Maybe there are some data points like this. K 1, 1, 2, 3, 4, 5. Just wait. Maybe ऐसा कुछ डेटा पॉइंट्स. तो पहले क्या करेगा, देखो ना, ये जो एल्गोरिदम है, जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, इसमें क्या करना चाहिए, पहले आप हम लोगों को नंबर ऑफ ग्रुप डिसाइड करना चाहिए. तो नंबर ऑफ ग्रुप वो इनपुट देना है, ये मे बी 2. तो जब नंबर ऑफ ग्रुप्स और जो कस्टमर्स इनपुट डेटा एल्गोरिदम में इनपुट जाएगा, तो पहले क्या करेगा, रैंडमली हर एक कस्टमर को कोई भी ग्रुप में असाइन कर देगा, कोई भी क्लस्टर में. मे बी हियर number of cluster equal to 2. Number of cluster equal to 2. Okay. So देखो maybe there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data points, means 7 customers. तो पहले क्या करेगा, रैंडमली कोई भी कस्टमर्स को कोई भी क्लस्टर में असाइन कर देगा. जैसा देखो यहाँ 4 कस्टमर्स को रेड क्लस्टर में असाइन कर दिया और 3 कस्टमर्स रिप्रेजेंट बाय ग्रीन सर्कल ग्रीन क्लस्टर में असाइन कर दिया. उसके बाद क्या करेगा, इट विल ड्रॉ अ सेंटर पॉइंट, सेंट्रॉइड फॉर एवरी क्लस्टर. सेंटर पॉइंट ड्रॉ करेगा.
So maybe center point represented by red star. Maybe represented by red star. Center of the red cluster. In the same way, क्या करेगा? सेंटर ड्रॉ करेगा ग्रीन क्लस्टर का. उसके बाद देखो फिर से चेक करेगा हर एक सेंट्रोइड से हर एक डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस. जैसा देखो मे बी ये सेंट्रोइड से जैसा 4 डेटा पॉइंट्स एंड 3 जो ग्रीन सर्कल डेटा पॉइंट्स है उसका भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा. तो यहाँ लग रहा है कि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ग्रेटर. तो क्या करेगा? फिर वो जो रेड सर्कल है, ये जो रेड सर्कल है इसको क्या करेगा? असाइन इनटू ग्रीन क्लस्टर, उसको रीअसाइन करेगा. तो देखो जब रीअसाइन कर रहा हूँ ये रेड से ग्रीन हो गया क्योंकि ये नियर आ रही है सेंटर का मे बी. तो जब ये डेटा पॉइंट्स ये क्लस्टर में आ गया तो देखो सेंटर पॉइंट, चेक द सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट अभी हुआ होगा नहीं. तो इसलिए क्या करेगा? फिर रिकम्प्यूट द सेंटर पॉइंट ऑफ एवरी क्लस्टर, मीन्स ये सेंटर पॉइंट होगा. इन द सेम वे रिकम्प्यूट दिस क्लस्टर सेंटर पॉइंट ऑल्सो. तो अभी देखो सेंटर पॉइंट कहाँ होगा? ऑब्वियसली थोड़ा सा इधर आ जाएगा. तो ऐसा करके रीअसाइन एंड रिकम्प्यूटिंग प्रोसेस चलता रहेगा. कब तक चलेगा? कि ऐसा रीअसाइन रिकम्प्यूटिंग करते करते जब सेंटर पॉइंट सेंट्रोइड का कोई अपडेशन नहीं होगा, कि कंजिक्यूटिवली तो 2 बार करने के बाद देख रहा हूं कि सेंटर पॉइंट का और कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, देन क्या करेगा? स्टॉप द इटरेशन, स्टॉप दिस प्रोसेस एंड क्रिएट द ग्रुप्स. Got it? So I write over here that is these are the iterative clustering algorithm. At a time create नहीं होगा, iterative process, recomputing, reassign, in which the notion of similarity is derived by the closeness of data point to the centroid of the cluster. And K-means clustering algorithm is a popular algorithm that falls into this category. तो यहाँ एक K-means clustering बोल के algorithm है. जैसा K नियरेस्ट नहीं बात किए थे आप लोग, K represent the number of cluster, and in this model the number of cluster required at the end have to be mentioned beforehand, which makes it important to have prior knowledge of the data set. And these models runs iteratively to find the local optimum value. So in that model actually हम लोगों को क्या पास करना चाहिए? Number of groups and input values. Later we discuss about the programs also. Another approach, the distributive model. These clustering model are based on the notion how probable, मतलब probability, सब clustering का algorithm है. Is it that all the data points in the cluster belongs to same distributor? For example, I think all of you know that the naive Bayes Gaussian approach. These models often suffer from overfitting, लेकिन इसमें एक problem, तो इसलिए आजकल ज़्यादा use नहीं हो रहा है. A popular example of this model is the expectation maximization algorithm, which uses multivariate normal distribution, that is distributed models, based on the prior probability, likelihood probability, and posterior probability. And density model, these models search the data space for areas of varied density, मतलब density check करता है, percentage of data points in the data space. It isolates various different density regions and assign the data points within these regions in the same cluster. जैसा example different है कि DBSCAN, optics, these are the AI model available in density model.
So next, we want to discuss about the program. Okay, how it will works, how we write our program, how we create a different group or different cluster of customers. In the next class, we discuss about all the things. अच्छा, आज का जो भी डिस्कस किए थे सबको समझ में आया?